हेलो एंड वेलकम टू ए फॉर आर्सेनल। कैसे हो आप लोग? नाइस टू सी यू ऑल, नाइस टू सी यू ऑल। सॉरी, इस चैनल पे मैं काफ़ी टाइम तक गायब था यार। आई हैड टू वर्क अ लॉट वर्क अ लॉट फॉर माई PhD यार। एंड अब फाइनली वी आर बैक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन लेट। आई नो स्टिल बोल्स, इट्स ऑल राइट, वी आर ऑन टाइम, वी आर फाइन। एक ही मिनट की लेट हुई है। पुनीत, नाइस टू सी यू। अजय, नाइस टू सी यू। शिवम, नाइस टू सी यू। Tracy, of course, nice to see you as well. How are you all? कैसे हो? Excited for this week, यार? Excited for this week? Hello, Indian Scouts, nice to see you, यार. Puneet, big match today, यार. Not today. Big match on Sunday between the both of our teams, यार. हेलो दक्ष, डर का माहौल है फॉर दिस वीकेंड। कम ऑन यू गनर्स, says अनिंद्या। भाई डर तो बहुत लग रहा है। अब इट इज व्हाट इट इज यार। इटली की पूमा 2021 जर्सी, भाई दिस प्री मैच किट बाय इटली इज एब्सोल्यूट गॉड लेवल। मैं बता नहीं सकते, इट्स सच अ ब्यूटीफुल किट। होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस थोड़ा नीचे। ओके, या कैसे हो? वेटिंग फॉर दैट क्रैकर ऑफ अ गेम भाई। मी टू मैन। वेल नॉट रियली, बट इंटरेस्टिंग गेम होगा देखने के लिए। वेट फॉर सम पीपल यार। एंड आई नो मैंने लॉन्च वाले पे वीडियो नहीं बनाया है, सो वील स्टार्ट विद रियली जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट रियली वेंट रॉन्ग एट आर्सेनल एंड लॉन्स, जो यूसीएल में हम गेम हारे थे। एंड आई हैव वॉच द गेम ओवर एंड ओवर अगेन। मैंने कुछ स्क्रीन ग्रैब्स लिए हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू टैक्टिकली कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन एट आर्सेनल राइट नाउ। एंड होपफुली आप लोग, काफी लोग मुझे कहते दक्ष भाई थोड़ा टैक्टिकल एनालिसिस करो। आई होप आप लोग आए हो यार, बिकॉज दिस विल बी अ लिटिल टैक्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट आर्सेनल इज डूइंग। हेयर कट करवा लिया, थैंक यू सो मच। यस, हेयर कट करवा लिया। लुकिंग फ्रेश, समबडी सेड, थैंक यू सो मच। दोनों टीम के की प्लेयर नहीं खेल रहे शायद। यस, बट यू हैव मोर की प्लेयर्स देन वी डू। दैट्स गोइंग टू बी द डिफरेंस। बट आई थिंक जब हम लॉन्च वाली गेम की बात करेंगे, यू विल काइंड ऑफ सी why City are heavy favorites. मतलब एक तो favorites तो हैं ही हैं, but why I also expect City to win this one quite comfortably. And how City might actually play, you never really know. Again, मैंने City के ज़्यादा games नहीं देखे हैं because inevitable conclusions होते हैं City game के. They might even go down 1-0, but they end up winning 3-1. And City during big games यार एक बहुत different team है. अपार्ट फ्रॉम आर्सेनल, सिटी यार काफी और टीम्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम वीक्स हैं। यू नो, इफ यू टॉक अबाउट स्पर्स, दे प्ले ऑन सैटरडे एंड दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टॉप, at least on Saturday when they play Luton Town away. So you know, Spurs in good form can go top. फिर आप देखोगे चेल्सी, आफ्टर अ वेरी वेरी मच नीडेड विन, दे प्ले बर्नली हु आर लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। ऑल्दो मिड वीक में बर्नली का भी आई थिंक 1-1 ड्रॉ हो गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वाज इट बर्नली और लूटन, मैं भूल गया। बट या, बर्नली ऑल्सो नॉट इन ग्रेट फॉर्म, बट चेल्सी नीड अनदर विन, तो हो सकता है चेल्सी का भी कुछ अच्छा हो जाए। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मैन यूनाइटेड, two consecutive losses, once against Palace and once against Galatasaray, and एक sort of पूरा negative माहौल है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एंड या, they need a win themselves. And Liverpool versus Brighton जो 2-0 कल डाउन थी, 2-2 कम बैक किया लिवरपूल, who are winning, but they would be angry with their Spurs वाला गेम जहाँ पे another player got sent off. Sorry, two players got sent off. And VAR की controversy हुई and stuff like that. So, you know, Liverpool have a narrative building themselves, and this is the Premier League, man. So Spurs, Arsenal, United, Chelsea, City, सब के सब have a narrative. Of course, Newcastle को हम कैसे भूल सकते हैं? A big win against PSG in the Champions League. They will want to continue that momentum in the Premier League. Villa, um, आई थिंक उनका, मैंने उनका यूरोपा लीग गेम नहीं, सॉरी कॉन्फ्रेंस लीग गेम नहीं देखा। दे हैड अ ह्यूज विन लास्ट वीकेंड, बट दे आर मिसिंग डियाबी नाउ। तो उधर क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई बीन रियली वरीड फॉर सिटी इन एनी गेम, बट टुडे आई काइंड ऑफ हैव अ बैड फीलिंग इट मे नॉट गो वेल फॉर सिटी। यार देखो, सिटी हैव अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, and that should give some confidence to City fans. Yeah, I would personally say. But Stones not playing today also. यार स्टोन्स तो आ ही गया ना ट्रेनिंग पे। आई थिंक he'll be fine, he'll be okay. So मे बी उधर कुछ होगा सीन।
We don't have Jota, Gakpo, Jones for the match against Brighton. Those are huge misses. But Brighton themselves are missing Pervis Estupinian. Unka attack looks a little out of sorts. But if Brighton need a game to bounce back, I think Liverpool is the perfect game for Brighton to bounce back again. हम again मैंने जैसे कहा था हम अभी सारी गेम्स की प्रीव्यू करेंगे बट क्योंकि मैंने लॉन्स का रिव्यू नहीं किया था हम एक मिनी रिव्यू कर लेंगे और उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है गाइस एंड दिस प्रेजेंटेशन होपफुली आई मीन इट्स टैक्टिकली मैंने करने की बेस्ट कोशिश करी है बट इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग अगेंस्ट लॉन्स आर्सेनल की जनरल सीजन ट्रेजेक्टरी में क्या इशू है एंड हम सिटी के अगेंस्ट आर्सेनल का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटी कैसे खेलेगी ये शायद से हम थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं पेप कॉन्फ्रेंस चल रही ही सेड अबाउट स्टोन्स अच्छा फेयर इनफ भाई फेयर इनफ सो let me see if this is visible for you guys or not. Okay, hold on. मेरे को पहले इस पे जाके let me come back to the first slide. Can you guys see? ना ये तो गलत ही दिख रहा है. Stop sharing. One second. प्रेजेंट करेंगे हम शेयर स्क्रीन करेंगे हम विंडो पे जाएंगे हम आर्सेनल लॉन्च पे जाएंगे हम राइट ओके ओ अच्छा वो पीपीटी खुल गई थी इसलिए ऑलराइट कैन यू गाइस सी दिस लेट मी हाइड दिस पार्ट एंड लेट मी हाइड दिस स्लाइड्स ओनली हाँ ओके सो अगर हम लॉन्च की थोड़ी सी बात करें यार हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे स्वंडी बट हम एंड में अपडेट ले लेंगे आपसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट एंड कीपिंग अस अपडेटेड अगर हम देखें आर्सेनल वर्सेस लॉन्स पे क्या गया आर्सेनल पहली बात तो एक बहुत अजीब फॉर्म से आ रही है बिकॉज अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड हमने सेकंड स्ट्रिंग खिलाया वो जीत गए अगेंस्ट बोर्नमथ हमने फर्स्ट 11 खिलाया वो 4-0 जीत गए लॉन्स के अगेंस्ट एक्चुअली हुआ क्या राइट अरे वेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड भाई चल जा ब्लडी हेल अरे राइट डाउन एरो की तो अगर हम लॉन्स को देखें इन लीग लॉन्स की सबसे बड़ी स्टेटिस्टिक जो स्टैंड्स आउट ऑफ कोर्स इज द लीग पोजीशन देयर 15th इन लीग एक हाई पोजेशन टीम है जो जिसने एक ओपेंडा को एंड फोफाना को लूज कर दिया है दीज गाइज फिनिश सेकंड इन लीग लास्ट सीजन बट आफ्टर लूजिंग ओपेंडा एंड फोफाना दे आर 15th when you look at some touches of theirs they have the lowest in the league जो उनके टचेस इन देयर ओन थर्ड हैं जो काफी अजीब सी बात है बिकॉज इट्स अ हाई पोजेशन टीम एंड एक हाई पोजेशन टीम को आप देखते हो जैसे भी कोई टीम बिल्डअप करती है आर्सेनल चेल्सी भी करती है लिवरपूल भी करती है मैन सिटी भी करती है आपका बिल्डअप हमेशा आपके बॉक्स अपने हाफ से स्टार्ट होता है but they have the lowest touches in the league when it comes to all of Liga. They have 33 lower touches than the last team. अगर आप उनके passes in final third देखो they are second. If they look at the passes in penalty area, crosses into penalty area, progressive passes, all of these they are second. Shots के मामले में third in league key passes के मामले में मैं इधर आ जाता हूँ key passes के मामले में they are third. अगर आपको other stats देखने हैं तो they have the fastest yes third fastest attack in league. अगर आप उनकी प्रोग्रेशन पेस देखें 1.98 मीटर्स पर सेकंड की चलते हैं एंड their worst statistic is they only convert 26% of their shots on target which I think is one of the worst in liga जब हम लॉन्स की बात करते थे दिस इज हाउ लॉन्स जनरली डिफेंडेड अगेंस्ट अस यहाँ पे 5-4-1 का डिफेंस होता था जब आर्सेनल इन पोजेशन होती थी एंड ये 5-4-1 इज नॉट अ न्यू डिफेंस जो आर्सेनल ने फेस किया है दिस काइंड ऑफ डिफेंस हमें एवर्टन के अगेंस्ट भी मिलता है बट द की डिफरेंस इज एवर्टन का जो 5-4-1 था वो उनके बॉक्स के बहुत पार था एक 5-4-1 प्रेस करती है लॉन्स अगेंस्ट आर्सेनल विद द मिड टू हाई ब्लॉक मेरे हिसाब से केविन डांसो उनके लिए सबसे की प्लेयर था आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस टारकाउस्की वर्सेस डांसो में डांसो वाज द की डिफरेंस बिटवीन लॉन्स एंड जो एवर्टन के अगेंस्ट आर्सेनल ने फेस किया था नाउ आर्सेनल के अगर हम कुछ ट्रेंड्स देखें इस सीजन आर्सेनल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स हम बॉल आपको याद होगा फुलम के अगेंस्ट साका ने एक मिसप्लेस पास कर दिया था अगेंस्ट मैन यूनाइटेड वी गेव अवे द बॉल इन चीपली इन द मिडल एंड वो गर्नाचो ऑफसाइड हो ही गया था वरना वो भी हम गोल खा के गेम हार जाते हैं फुलम के अगेंस्ट अगेन सेट पीसेस में हम बहुत टर्न ऑफ हो जाते हैं एंड देन वी कंसीड अ गोल जब साका नहीं होता है जब हमने लॉन्च गेम में देखा there is no threat from the right मार्टिनेली के जाने से there is no threat on the left as well नहीं भाई एवर्टन ने भी 5-4-1 ही खेला था जिसके अंदर 4-5-1 उनकी स्टार्टिंग फॉर्मेशन है बट दिस इज हाउ यू डू इट
दिस इज हाउ एवर्टन डिफेंड इन अ 5-4-1 एज वेल. मैंने वो गेम भी देखा था. Arsenal aren't reliably creating chances when it comes to the level of ambitions, क्योंकि अगर हमारा है कि टाइटल चैलेंजेस बनना है, वी आर सिंपली नॉट क्रिएटिंग इनफ गोल स्कोरिंग चांसेस. दिस जो हमारे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं या चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज अ यूरोपा लीग स्लैश बेयरली चैंपियंस लीग लेवल हम कर रहे हैं. और हमारी जो अटैकिंग स्पीड है, अगर हम स्लो खेल रहे तो हम पूरी गेम स्लो खेलेंगे, अगर हम फास्ट खेल रहे तो हम पूरी गेम ही फास्ट खेलेंगे. देर इज नो एडजस्टमेंट. सिटी की सबसे डिफरेंस यही है कि सिटी can either attack fast or slow depending on how the game is going. If they feel they have an opportunity to break a press, they will attack fast with Doku. If they feel they have to be a little patient, you will have your Grealishes, you'll have your Bernardo Silvas, etc. जो गेम का टेम्पो कंट्रोल कर लेंगे. रॉड्री इसमें बहुत की प्लेयर है, वो जो मिसिंग होगा. बट अगर आप आर्सेनल का, जैसे मैंने बोला था, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट डेप्थ अच्छा खेल गई थी, फर्स्ट 11 बोर्नमथ के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेल गई थी. एंड टू बी ऑनेस्ट, वी वर गुड इनफ टू बीट लॉन्स. अगर आप आर्सेनल की मिडफील्ड की बात करें, आर्टेटा इन प्री सीजन डिप्लॉयड 15 पेयरिंग्स इन द मिडफील्ड. इसके अंदर आपको केवी और एंड टियर्नी एज इन्वर्टेड फुल बैक्स भी दिखे. पोस्ट सीजन में आपको पार्टे एट राइट बैक भी दिखा. एंड अगेंस्ट बारसा आपको जॉर्जिनियो एंड स्मिथ रो का भी डबल पिवट देखा. बट जब से सीजन स्टार्ट हुआ है, राइस इज डेफिनेटली द मेन स्टे. एंड अगर आप राइस का पास मैप देखें बॉटम राइट पे, मैं अपने आप को हटा देता हूं, इधर ले आता हूं. अगर आप राइस का पास मैप देखें बॉटम राइट पे, this was his pass map. And to be honest, he was the guy who was creating the most chances, and he lost a lot of passes and made a lot of mistakes also. But clearly, he was the protagonist against Lens. Declan Rice is very, very important to Arsenal. ठीक है. नाउ ये मैंने कुछ स्क्रीन ग्रैब लिया था ब्रेंटफोर्ड से कि आर्सेनल का एक्चुअल बिल्डअप कैसे है. अगेंस्ट आर्सेनल का अगर आप बिल्डअप देखो गाइस, जो हम कोशिश कर रहे हैं, आप आर गोलकीपर जो ओनाना भी करता है, आर गोलकीपर इज नाउ अ थर्ड सेंटर बैक. इसमें आपका मगालिश एंड टोमियासु आर स्प्लिट. ठीक है. यही ट्रेंड आपको काफी सारे अभी गेम्स में देखने को मिल जाएगा. आर्सेनल का बिल्डअप में अगर आप बोर्नमथ के अगेंस्ट भी देखें, हमने सिमिलर स्ट्रैटेजी करी थी. ये आपके सेंटर बैक्स हैं जो बॉक्स के बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर्स के पास हैं, जहां पे आपका सलीबा है. तो राया हमारा है एज अ सीबी हु विल जॉइन द बिल्डअप. ओडेगार्ड को आप देखें यहां पे, तो ओडेगार्ड इज ऑल्सो नाउ इन अ डबल पिवट विद राइस. तो इससे क्या होता है, जिनचेंको जो इस साइड है, ही हैज अ फ्री रोल जो ज्वाइन अप कर लेते हैं कभी कभी एज अ डायमंड एट मिडफील्डर भी. एंड ओडेगार्ड की ज्वाइनिंग से हम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और ओवरलोड्स काफी क्रिएट करने लग जाते हैं. ठीक है. नाउ इसी की ही कंटिन्यूएशन है कि आप देखो कि अगर आपके ये है हमारा गैब्रियल मगालिश ऑलमोस्ट लेफ्ट बैक पे खेल रहा है. एंड लुक एट वेयर डेविड राया इज, लुक एट वेयर राइस इज, लुक एट वेयर ओडेगार्ड इज, एंड लुक एट वेयर जिनचेंको इज. दिस इज आवर आइडियल बिल्डअप वेयर योर गोलकीपर इज ऑल्सो अ सेंटर बैक. ठीक है. अ, उसके बाद अगर आप देखो, ओ सॉरी, नाउ दिस इज हाउ वी बिल्ड अप इन दिस. ये तो होगी पिक्चर्स, एक जिफ भी मैंने डाउनलोड किया था. दिस इज हाउ वी एक्चुअली बिल्ड अप. राया इज अ सीबी हियर. लुक एट द ओडेगार्ड राइस डबल पिवट, मगालिश ओवर देयर, सलीबा ऑन द राइट. आपको जिनचेंको नहीं दिखेगा बिकॉज जिनचेंको हैज दैट फ्री रोल जो राया ढूंढ के पूरा डिक्टेट करते हैं. लुक हाउ फास्ट वी आर इन दिस असॉर्ट ऑफ अटैक. लुक एट दिस अगेन. लुक हाउ मेनी ब्राइटन बोर्नमथ प्लेयर्स आर देयर इन द प्रेस. 4 लोगों को एक पास से हमने निकाल दिया इस गेम में. राइट. सो this is how is our ideal build-up where Bournemouth have 1, 2, 3, 4, 5. Half the team is beaten by just one pass because Zinchenko becomes very crucial in this build-up phase. So Raya is our third CB. Our CBs are split. Declan and Odegaard are our double pivot and Zinchenko is the free player. Now, हम इसके आगे बढ़ते हैं. Benefits of this build-up क्या हुआ? Odegaard got the most touches and he was orchestrating play much more forcefully जब हमने टॉटनहम के अगेंस्ट देखा था. राइस को बहुत हेल्प मिल रही थी, कभी ओडेगार्ड से मिल रही थी, दोनों सीबीज थे एंड इनफैक्ट बेन वाइट भी था, तो उसको ओवरबर्डन नहीं होना पड़ा. दैट राइस डिड नॉट बिकम द गाय हु हैड टू ब्रेक लाइंस, जो उसको लॉन्च में करना पड़ा. जिनचेंको कितना भी कहीं पे भी फ्लोट कर सकता था एंड वो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर बन गया था. अगर आप बॉटम पे देखो, these were Odegaard's touches and passes received in against Bournemouth. एंड राइट पे आपको दिखेगा टॉटनहम में, आपको वॉल्यूम में ही डिफरेंस दिख जाएगा.
कि कितना ज्यादा डिफरेंस था. ठीक है. नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड या ओ ये हाँ राइट, ये जस्ट अनदर स्क्रीन ग्रैब फ्रॉम द गेम जहां पे जिनचेंको वाज आस्किंग राया टू स्लो द गेम डाउन, ताकि और इधर भी इस इमेज में 5 बोर्नमथ प्लेयर्स आर इन्वॉल्व. सो वी स्लो द गेम डाउन इनफ ताकि वी अट्रैक्ट इनफ प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड देन वी बिल्ड अप क्विकली. अगर इधर राया प्रेस होने लगता, वाइट इज एन ऑप्शन बिकॉज जिनचेंको इज बिंग कवर्ड. आरेओला ने कोशिश करा कि हम जिनचेंको को मार्क कर लें, बट एटलीस्ट यू विल ऑलवेज हैव सलीबा जो इस फ्रेम से बाहर है, एंड वाइट हु कैन स्टिल बिल्ड अप. एंड इस सीक्वेंस में आई थिंक हमने बेन वाइट से बिल्डअप शुरू कर दिया था. बट यू सी हाउ दिस बिल्डअप हेल्प्स. एंड अगेंस्ट बोर्नमथ इन पोजेशन आप देखो कि हमारी टेरिटरी क्या थी. ओडेगार्ड ने प्रॉपर राइट स्पेस कवर कर रहा था, हैवर्ट्स ने प्रॉपर लेफ्ट स्पेस कवर कर रहा था, हेसूस ऑन द विंग्स वाज गुड, साका वाज गुड, एंकेटिया का काफी ओवरलैप था इन द मिडल ऑफ द पिच. इन पोजेशन इट वाज द परफेक्ट गेम वी रियली प्लेड इन फ्रॉम मिनट 1 to 75. तो लॉन्स पे ऐसे हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यार अगर आप बोर्नमथ पे आपने कितना परफेक्ट प्लान बिछा दिया, तो लॉन्स पे क्या हुआ? लॉन्स नंबर 1 हैज मच बेटर डिफेंडर्स. दे हैड अ क्राउड. आई थिंक अवे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट द बिगेस्ट डिफरेंस वाज लॉन्स रिफ्यूज टू गेट बेटेड. ठीक है. नाउ आप लोगों को मैंने ये इमेज दिखाई थी अबाउट हाउ 5 बोर्नमथ प्लेयर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेसिंग अस. This is a screen grab from the launch game at minute 62. Now, of course, game state है, but अब score मैंने इसलिए ये वाला screen grab लिया है because 1-1 है and Lons still want to win this game. Look at how Lons are playing. ठीक है. Lons यहां पे एक भी बंदा प्रेस नहीं कर रहा है. We have all 4 players in this, but even if Raya plays the most beautiful pass, they still have 11 people versus 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. So it is still an 11v6 जब आप लॉन्स के यहाँ पे बिल्डअप देखो. नाउ इट्स देखो, जैसे इंडियन स्काउट्स कह रहे हैं क्राउड वाज वोकल, इट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट, बट हाउ डिड दे एक्चुअली टैक्टिकली मैनेज अस? द बिगेस्ट रीजन वाज दे डिड नॉट गेट बेटेड इनटू आवर प्रेसिंग. अगर वो हमें बोर्नमथ की तरह प्रेस करते, हम उनको खा जाते. ठीक है. लुक एट दिस जिफ. हमारे पास बॉल है इस जिफ में अपने हाफ में. लेट इट स्टार्ट. ठीक है. The second we enter near their half, now look at their press. Now look at their press. Now 4 to 5 people are pressing us. Do you see? So their pressing is not near our box. Their pressing is close to the middle of the pitch. ताकि यहां पे अब हम क्या करेंगे? अगर हमने आगे पास किया, द प्लेयर इज सराउंडेड आउट. लुक एट ओडेगार्ड इधर टॉप लेफ्ट में राइट चैनल पे. ओडेगार्ड को अपने पास के ही सराउंडेड बाय 4 to 5 प्लेयर्स. We have to go back. We have to go back. And now they can press us because Raya is out. Raya cannot be a third CB here. All right. So very very smart by Lons here. In strategy basically Lons ने क्या किया था? एक चीज क्रूशल मिस्टेक अवॉइड करी लॉन्स ने, which was number 1 that काफी सारी टीम्स even in the Premier League, काफी सारी टीम्स even in the Premier League, they press but they press without either cohesion or intensity. जैसे अगर आप देखो बोर्नमथ ने कोहिशन नहीं थी उनकी प्रेस में. यस 5 लोग भाग रहे थे, बट क्या कोहिशन था? बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. सेम चीज चेल्सी में लास्ट ईयर था, एंड यूनाइटेड भी ये करती रहते. जो गैलाटासराय के अगेंस्ट हारी थी, रैशफोर्ड गलत प्रेस करता है, ब्रूनो कुछ ज्यादा ही प्रेस करता है, हॉयलैंड अच्छा ही प्रेस करता है. मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट. सो लॉन्स को क्रेडिट देना पड़ेगा. दे प्रेस रियली रियली वेल एंड काफी ऑर्गेनाइज प्रेस था. एंड आपको ये डांसो के कोट से ही पता लग जाएगा कि वी गेव इट आर ऑल. आर्सेनल केप्ट इट रियली डीप. वी केप्ट आवर कंसंट्रेशन एंड दे डिडंट रियली. एंड आई थिंक दैट इज द की डिफरेंस यार. इट वाज जस्ट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन बोथ टीम्स. नाउ फाइनली हम आर्सेनल के अटैक पे बात करते हैं. बिल्डअप रिव्यू पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. ठीक है. आर्सेनल ने इस सीजन हैव फेस्ड द डीपेस्ट लाइन इन ऑल ऑफ यूरोप. ये आपको दिखेंगी सारी एवरेज जो आपको लोएस्ट लाइंस इन द टीम्स जो खेलनी पड़ती है. ठीक है. आर्सेनल की जो डीपेस्ट लाइन है, दे यूजुअली प्ले एन एवरेज ऑफ 36.61 अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन गोल. दैट इज द डीपेस्ट इन यूरोप. इधर आप देखो लेवरकूसन आर सेकंड मोर, बायर्न म्यूनिख 38, चेल्सी 39, सिटी 39.8. तो यू सी अगेंस्ट आर्सेनल teams genuinely always try to sit deeper than most other teams because अगर आप आर्सेनल को अटैक में थोड़ी सी स्पेस दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आर्सेनल की जो फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी है वो सबसे कम है.
अगर आप लॉन्स की डिफेंसिव लाइन देखो, इन द चैंपियंस लीग, दैट वाज अ एवरेज ऑफ 40.5 विच इज लोअर देन लूटन जो खेलती है। ठीक है, लूटन प्लेज अ हायर लाइन देन फकिंग लॉन्स ब्रो। एंड उनका जो 221.9 पासेस पर डिफेंसिव एक्शन, मतलब आप कितने पासेस ऑपोजिशन को अप्लाई करने देते हो बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअली गिविंग अ डिफेंसिव एक्शन या प्रेसिंग देम, दैट वुड बी द लोएस्ट इन द प्रीमियर लीग, 21.9। आर्सेनल का जो अटैक होता है, इट ऑनेस्टली फंक्शंस द बेस्ट इन, ये बाय द वे पूरा एक एनालॉजी, मतलब एनालॉजी नहीं है, बिल्कुल एनेक्डोटली बोल रहा हूं मैं, इसका कोई अभी तक डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। बट एक जगह मैंने पढ़ा था दैट आर्सेनल के ना, इफ आर्सेनल्स अटैक हैज ओनली 5 to 6 passes on average, आर्सेनल प्लेज रियली रियली वेल। अगर आर्सेनल मेक्स मोर देन 5 to 6 passes, देन द अटैक इज टू स्लो, जो हमने लॉन्स के अगेंस्ट देखा था। अगर आर्सेनल का अटैक 2 से 3 पास में हो जाता है, इट इज टू फास्ट, इट इज टू रेस्टलेस, जो हमने स्पर्स के अगेंस्ट देखा था। ठीक है, पार्टे वॉज इन सब्सटीट्यूट अगेंस्ट लंस, हाँ पार्टे इज फिट इनफ आई थिंक, बट देखते हैं खेलेगा या नहीं। अगर आप टॉटनहम के अगेंस्ट देखो, ये जो 5 to 6 वाला मैंने रेशियो निकाला हुआ है, अगर आप टॉटनहम के अगेंस्ट देखो, अगेंस्ट आर्सेनल एवरेज 3.47 passes per possession अगेंस्ट टॉटनहम। दिस वाज टू फास्ट एंड गेम एक बास्केटबॉल गेम टाइप्स हो गया था। इसमें ऑफ कोर्स स्पर्स का मिडफील्ड भी बहुत बढ़िया था, उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। अगेंस्ट बोर्नमथ देमसेल्व्स 5.6 passes per possession था आर्सेनल का, एंड लॉन्स के अगेंस्ट हमने 7.39 passes पर पोजेशन करा था, जिसमें हमें स्लो लगा था। आई थिंक फाइनली सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, आई विल टेक द चार्ट आफ्टर दिस, ये लास्ट स्लाइड ही है। सबसे बड़ा डिफरेंस इज हमारा मिडफील्ड में जो हमारी चांस क्रिएशन है, ये आपको दिख रहे होंगे क्या क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप मार्टिन ओडेगार्ड लास्ट सीजन एंड दिस सीजन इज 2023-24 एंड लास्ट सीजन 22-23, सक्सेसफुल अटैकिंग पासेस, ये सब तो ठीक है, ऑरेंज वालों पे ध्यान दीजिए। ओडेगार्ड लास्ट सीजन गेव 13.1 पासेस फॉरवर्ड पर 90, और इस सीजन हम 10 पासेस कर रहे हैं, तो इतना क्रिएट नहीं कर रहा है वो। की पासेस पर 90.6 से 0.3 हाफ हो गया है, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 5.2 से 3.7 हो गया है, एंड प्रोग्रेसिव पासेस 5.9 से 4.08 हो गया है। अगर आप नंबर 6 पे देखें, पार्टे वाज आवर 6 लास्ट ईयर। डेक्लन राइस आपको दिख रहा है कि डेक्लन राइस के एक्यूरेट पासेस बढ़ गए हैं, बट फॉरवर्ड पासेस फिर भी कम है पार्टे से। 3 फॉरवर्ड पासेस पर 90, ही इज डूइंग लेस। ही इज डूइंग more lateral passes than Partey, 5 lateral passes more than Partey per 90, and finally आप देख लीजिए passes into final third भी कम है, and progressive passes per 90 भी कम है। Zinchenko last year to this year again सारे metrics में काफी heavy fall है, but the biggest one is Havertz and Xhaka। अगर Granit Xhaka was receiving 37.3 passes per 90, Havertz is receiving 23 passes per 90। सेम अगर आप ग्रैनिट शाका का देखें, पासेस पर 90, हिमसेल्फ मेकिंग पासेस 47 से आके 28 हो गया है, एंड फॉरवर्ड पासेस पर 90 13.3 से 5.7 आ गए हैं। तो मतलब यू सी इतना बड़ा ड्रॉप ऑफ हुआ है आर्सेनल के उसमें, तो इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट इनएविटेबल भाई कि ये कहीं ना कहीं तो होगा, एंड आर्सेनल्स अटैक हैजंट लुक गुड, ये तो अब स्टेटिस्टिकली भी बैक कर दिया। सो या, this was my sort of short review on what really went wrong Arsenal versus Lens पे। मेरे पास और भी स्लाइड थी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेगा, 25 मिनट हमने बात कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डिड यू टेक फ्रॉम दैट प्रेजेंटेशन? फिर मैं आप लोगों की चैट्स भी लेता हूँ। साका इंजरी अपडेट, नो अपडेट इज द अपडेट। The update is there is no update. There will be a training session tomorrow, Friday, Saturday, and then we'll decide if he has to play or not। भैया इतनी टैक्टिक्स देख लूंगा तो फुटबॉल एक्सपर्ट बन जाऊंगा आप जैसे। नहीं यार, थैंक यू सो मच। सिटी वर्सेस आर्सेनल मैच वाज ऑन माय बर्थडे वीकेंड, नेवर विन व्हेन आई प्ले ऑन माय बर्थडे वीकेंड। कोई बात नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस, एंड ट्रस्ट मी आपका अच्छा हैप्पी बर्थडे होगा। I think this other teams not wanting to get the bait is what affected Brighton in Europe as well. Great point, Arpit. ब्राइटन की सबसे बड़ा थिंग इज, उनाई एमरी ने जो सबसे बड़ी चीज एक्सप्लॉइट करी, ब्राइटन हैव प्लेड 0 long balls in this season, do you know? 0 long balls from the goalkeeper. They always play out from the back, and यही है डिफरेंस कि उनाई एमरी रिफ्यूज टू गेट बेटेड,
let Brighton come towards his half and then press the hell out of them, won the ball high and then converted the chances. And that's what Lons also did. Lons के chances जो थे बड़े मुश्किल थे by the way, but they just ended up converting and that's it. Again, it's not like Arsenal did not have the opportunity to win that game. Tomiyasu corner, Trossard का thing, Havertz की volley, तीन चार chances थे हमारे पास. But there are two factors. Odegaard being less of a creator, although he's shooting much less also compared to last season. But Odegaard being less of a creator and जो Granit Xhaka to Havertz drop हुआ है, that is the biggest issue. Odegaard has to increase his progressive passing like last season. Agreed. बताऊं क्या है ये गेम में हमारा जो लाइनअप होगा बड़ा क्रूशल होने वाला है दोस्तों. If we play with Havertz again, I am telling you the game is lost before even the ball is kicked. Against City, you cannot put yourself at a disadvantage. And I know Havertz worked for us in the Community Shield, but I think Community Shield was completely different, bhai log. Deserby played that baiting style all along. Pep says we cannot start crying and complaining. We have to find solution, and 11 players will be trying to win in London. भाई क्या बोलता है ये बंदा इसके पास इतने अच्छे solutions हैं. Considering Saka and Martinelli are injured, how will Arsenal manage to win this game? That is the big question, right, Mayur? Arsenal City के against कैसे जीत सकती है? How can we really hurt City? Because in my जितनी भी मैंने games देखी हैं City की, right? There are two things which always hurt City apart from them losing their own concentration. ठीक है? Number one, pace. Against Wolves, Pedro Neto की pace was very crucial against City. Against United last season, Rashford ki pace is very crucial. Against Liverpool all these years, Salah ki pace is crucial. With Saka and Martinelli, if they are both out, and I think they both will be out, um, you lose out your pace. Who is the quickest? Eddie Nketiah. Do you really want to play Ruben Diaz versus Eddie Nketiah? Um, Second thing is, समटाइम्स डिपेंड भी करता है कि आपकी पेस कौन से फ्लैंक पे है. पेड्रो नेटो अगर काइल वॉकर वाले फ्लैंक पे खेलेगा ऑलवेज, तो मुझे लगता है इट्स नॉट गोइंग टू गो वेल फॉर वुल्व्स. ठीक है. अगर पेड्रो नेटो खेलेगा फ्रॉम लेट्स से दी आके फ्लैंक, आके की बहुत बेकार गेम गई थी, यू विल नीड दैट पेस टू ब्रेक डाउन दीज गाइस. सो आई विल से दक्षिण लग रहे, डोंट वरी, थैंक यू सो मच. सो how do you really beat Manchester City then? Because pace is one thing which is missing. The second thing that's missing is strength. Of course, they have Ruben Diaz. Of course, they have Josko Guardiola, both pacey and strong. But strength goes a long way into winning these second balls. Now, do we have strength in attack? I would say no. Do we have pace in attack? I would say no. What is the biggest advantage we have? This middle of the park. If Partey is fit, and I think he is, because he made the trip to Lens, बेंच पे था. आई डोंट थिंक गेम स्टेट ऐसी थी कि हम पार्टे को लाएं, ऑल्दो लाते तो शायद से कंट्रोल ज्यादा होता, और मे बी वाज नॉट 100%, आई डोंट नो. बट इफ पार्टे एंड राइस आर प्लेइंग, आई थिंक आर बिल्डअप चेंजेस मैसिवली. आई थिंक हमारी बैकलाइन सेम रहेगी. जिनचेंको इज अ 60-minute प्लेयर, उसके बाद आपको टॉमियासू मिल ही जाएगा. एंड यू कांट बेंच जिनचेंको एज मच एज मेरे को देखना है. अगर डोकू खेल रहा है, आई वांट टू सी टोमियासू डोकू, बिकॉज टोमियासू इज अ बेटर 1v1 डिफेंडर. बेन वाइट को रेस्ट मिलना आई थिंक इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर अगेंस्ट लॉन्स. तो बेन वाइट भी देखना पड़ेगा अगेंस्ट डोकू कैसे करता है, बट डोकू इज क्लास. इन द मिडल ऑफ द पिच, पार्टे विल हैव हिज हैंड्स फुल विद एल्वारेज. रॉड्री की एब्सेंस गिव्स ओडेगार्ड अ लॉट ऑफ लाइसेंस, बट मेरे को लगता है बर्नार्डो सिल्वा विल बी द वन दैट इज मार्किंग ओडेगार्ड. एंड अगर बर्नार्डो वाज द वन मार्किंग ओडेगार्ड, because if Bernardo plays, that'll be crucial as well. Saka versus Ake would have been the matchup. The matchup. I don't know how City will line up. That is the biggest problem. I don't know how City lines up. Will they play Calvin Phillips? Will they play Matthias Nunez? I don't know. तो middle of the park में dominance करना सबसे important है, which is why I think we will play Kai at center forward. My predicted lineup is back line will be same. Raya खेलेगा मेरे हिसाब से. Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko. Partey, Rice at left 8, Odegaard at right 8, Havertz at center forward, Jesus on one of the wings and Trossard on the other wing. Otherwise, Arteta अगर हमने एडी को खिलाया,
तो पता नहीं क्या होगा. अगर हमने हैवर्ट्स को मिडफील्ड में खिलाया देन इट्स ओवर गाइस, because we need to win those second balls in the midfield. Of course, Pep can adjust, bring Ruben Diaz deeper into the midfield and उसके बाद कुछ कर सकते हैं. हाँ, पार्टे अवेलेबल है, मेरे हिसाब से पार्टे अवेलेबल है. So you need to win the middle of the pitch. You need to win the second balls. I don't think we will play out from the back too much versus City. I think their press is काफी harassing. I think अगर आप City को अपने ही half में रखोगे, then they have better opportunities to score against you. So I expect us to play a lot more long balls, and Raya की long balls hopefully accurate होंगी enough that we get something. Of course, the ideal miracle will be that Martinelli is fit and Saka is fit, and we have Declan, and we have Partey, and we have Odegaard, and we have anyone at hopefully Jesus at 9 and stuff like that. Hopefully हमारी team full strength team खेलेगी. But मुझे नहीं लगता Saka is fit enough, to be honest guys. Saka will be at 50-60% capacity. And I don't expect the best game from him anyway. तो Doku, so if I have to say, win the middle of the pitch and maybe you can get an advantage. Now, last season Liverpool managed to win by one long ball to Salah. Can Arsenal try this? वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास pace नहीं है. Our two paciest forwards, Saka and Martinelli, are doubts for this game. Trossard is fast but not fast enough like Salah for sure, right? Um, उसके अलावा Jesus not fast. उसके अलावा maybe Fabio Vieira, but Fabio Vieira is not like that. Stones won't play, right? So it will be Diaz and Guardiola then. It will be Diaz and Guardiola in the middle. या Kanji भी खेल सकता है, to be honest. And Ake at the left and Walker on the right. Middle में क्या होगा? I don't know if it's going to be Kovacic and Nunes. I don't know if it's going to be Calvin Phillips. I don't know if it's going to be Bernardo. Jesus is fast, but not like Salah and Martinelli fast, right? Ismail भाई, यही है सबसे बड़ा. साका को खिलाना will be child harassment from Arteta side. I think इस गेम में तो खिलाना ही पड़ेगा हमें. I think खेल देगा. उसको इंजेक्शन से ठूस देंगे हम, and then we'll be like खेलो खेलो. And I think we'll make him play, and I think we'll make him pull out from England. We should make him pull out from England. पेस होती तो भी काइल वॉकर है. साला वन बिकॉज कंसेलो पेप की झगड़ा भी हुआ था. नहीं नहीं नहीं, नॉट ओनली दैट यार. देख मयंक, इट्स नॉट ओनली अबाउट पेस ऑन काइल वॉकर साइड. नेटो का सबसे बड़ा वेपन ही यही था कि उसने अकांजी वाली साइड, आके वाली साइड पे काफी पेस भी यूटिलाइज किया था. सो Martinelli versus Walker, I understand Walker can beat Martinelli 1v1 on pace and everything. The problem becomes when you have pace from Martinelli and then also from Saka. Especially if you don't have Stones, especially if one of your midfielders is marking Odegaard. अगर आपका midfield आपको weak लग रहा है तो I still expect City to win this one very easily. I think my prediction will be City will win this game 3-1. I think Alvarez, Haaland and Doku, all three will get on the score sheet. I think Doku 1v1 will be a menace. And I think he will score for sure. I think Haaland अपना drought Arsenal के against तोड़ देगा. And I think Alvarez will also score the third goal or something like that. I think those three players were going to be key for City. I think we will try and hurt City, but we will not convert our chances, and the conversation will be the same जो मैंने इस presentation में आपको पिछले दिखाई थी. Um, that we will have our chances, just not creating enough. And that's it. Um, you say what you want यार. अगर मैं बोलूंगा आर्सेनल सिटी को 3-0 तोड़ देगी, आप लोग बोलेंगे आप डिल्यूजनल हो रहे हो. आपको पता है, आई नेवर गिव टेक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. एक तो हर गेम में यार, यूनाइटेड वाले गेम में एक दिल दिमाग वाली बात होती है. दिल वो सिंह हम जीतेंगे 2-0 या 3-1. दिमाग वो कह रहे इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज गेम एंड समथिंग लाइक दैट. इधर मेरा दिल एंड दिमाग दोनों, it I know that City will win. Us getting a draw, considering the injuries both teams have, will be a massive result. Of course, I think a juju that Arteta has not beaten Pep in any of these last 7 meetings. I think the juju that Arsenal have not beaten City in the league. हमने 0 points लिया against City. Every team has gotten at least 1 point against City. Every team, including Burnley. But we haven't. And that's a shame. But I think ये juju थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा. It's a psychological thing more than a tactical thing also. I think we know going into this game that we are not good enough. And I know when we go into this game, we think that we are not at full strength. So I think we will score against City. We should, hopefully. It'll probably be from a set piece or something.
और डिफ्लेक्शन जैसे हमने कम्युनिटी शील्ड पे कर लिया था. बट आई 100% back City to win this game 3-1. इसमें I'm not even being delusional or jinxing or whatever. I trust my manager, but some of his decision making is very scary. एंड मैंने आपको दिखाया कि लॉन्स ने कैसे एक बहुत बढ़िया सिस्टम डिवाइस किया आर्सेनल को बीट करने के लिए. एंड मुझे लगता है सिटी भी कुछ हद तक वो सिस्टम डिप्लॉय करेगी. मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करेगी, बट they are doing it, they're going to do it really well. So I think City will win this one 3-1. Anyways, chat questions regarding the presentation, feedback regarding the presentation and reviews. अगर आपको ऐसे reviews पसंद है, so I'll do my best. The reviews will not be immediate because यार ये सारी चीजें compile करने में, देखने में और समझने में टाइम लगता है. तो immediate reviews तो नहीं आएंगे, but tactical review आने में थोड़ा शायद से टाइम लग सकता है. तो जिसने भी देखी थी वो प्रेजेंटेशन, अगर कोई फीडबैक है तो बढ़िया. नहीं देखी थी, आप वीडियो स्टार्टिंग से दोबारा देख सकते हैं. आई हैव डन अ, at least I tried my best to do a comprehensive presentation. It was a short presentation so that you understand what was the thing. Great analysis. Thank you so much, Mayur. Arsenal will win for sure, says Salin bhai. I wish I had that confidence. Ramsdale or Raya, who should start? Should, I don't know. For big games, I will always back Ramsdale. He has a big personality. He was big during the Community Shield as well. Who will start? It will be David Raya. And I'll tell you why. जो हमने गोल लॉन्स के अगेंस्ट खाया था ना, वैसा ही हमने बिल्डअप किया था अगेंस्ट बोर्नमथ ऑल्सो. ये भी मैंने चीज नोटिस करी थी जिसको मैं स्लाइड पे डालना भूल गया था. ठीक है, ये सेम चीज हमने बोर्नमथ के अगेंस्ट करी थी एंड इट ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन अ गोल, या फिर इट रिजल्टेड इन दैट साका चांस, रिजल्टेड इन दैट गोल जो साका ने हेडर मार दिया था. ठीक है, इस लॉन्स वाले गेम में वो नहीं चला. टॉमियासु वाज अ लिटिल लेजी, रायास किकिंग वाज अ लिटिल लेजी एंड द लॉन्स डिफेंडर वाज अ लिटिल क्विक, एंड हमने उस पर गोल खा लिया था. ठीक है, बट द की डिफरेंस बिटवीन राया एंड रैम्सडेल इज, राया की गलती जो करी है, इट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस दैट द कोच हैज गिवन हिम. रैम्सडेल ने जो आजकल लास्ट सीजन इस सीजन गलतियां करी हैं, अनप्रॉम्प्टेड गलतियां हैं. याद नहीं आप लोगों को फुलम के अगेंस्ट, I know Saka की मेजर गलती थी, but Ramsdale was a little out of possession, I would say. Sometimes Ramsdale की saving is a little suspect. But I remember last year Southampton, last year Bournemouth, हमने हर जगह जो 18 सेकंड 20 सेकंड में गोल खाए हैं, it is because of Ramsdale mistakes. So I think Raya will start. Raya will start because उसकी जो गलती है वो कोच के इंस्ट्रक्शन पे, and that is something a coach will never mind. Yeah, City have vulnerabilities. Agreed. They are vulnerable in the middle, and they are vulnerable to pace and strength. Unfortunately, pace and strength right now is not our forte because of our injuries. It's the middle जहाँ पे depend करेगा हम कैसे खेलेंगे. But like I said, भाई लोग, um, I will. I'm not confident at all. Following you since 2 months now, a bit out of the box as I support both at the moment and Liverpool at the moment. I'm suffering from defense issues. Wait. Bro, been following 2 months from now, a bit out of the box as I support both at the moment and Liverpool. At the moment, been suffering from defensive issues. Instead of Garland, Lino should start. Is talking about Garland? Buddy, I'm so sorry, Gurshan bhai. Oh, acha. Atletico Madrid. ATM नहीं, at the moment नहीं, Atletico Madrid. Sorry. मैंने अभी आपका PFP देखा. Listen, man, I am trying to get into La Liga, and if I've watched, let's say, uh, 16 games this season, I have watched maybe six each of Madrid and Barca, and maybe three of Atletico Madrid. So I am not really familiar with your personnel as much. But in the Madrid derby, Lino was really, really good. Javi Galan, I think is still a little raw, but my vote will go for Lino. But again, ये मेरा बहुत uninformed opinion है, so please don't take it too seriously right now. ठीक है? I'm so sorry, but the more I watch La Liga, the better I'll inform you. Thank you so much for supporting me. Thank you so much, Goshen, and good luck to Atletico as well. Any player who can change the game as super sub from Arsenal in big game, I think that's lacking in Arsenal squad. I agree. I think Fabio Vieira can be that guy. I think
Trossard can be that guy. Trossard is a great sub who can come in and become a great impactor. But still not the level जो सिटी के पास subs हैं यार. Still not the level जो लिवरपूल के पास subs हैं. साका को सेकंड हाफ लाना वुड बी बेटर इफ ही इज फिट टू प्ले. ही कैन डोमिनेट द टायर्ड लेग्स एंड तो उस पर ज्यादा लोड भी नहीं होगा. आई गेट द लॉजिक स्वनदीप, बट व्हाट इफ द गेम इज बियॉन्ड यू इन द सेकंड हाफ? What if City go 2-0 up in the second half and then they are defending in their box and they're just waiting for counter through Doku and Haaland? Nelson, true, but I think Nelson against Lons was absolutely terrible, man. मैंने 2 बार गेम देखे and दोनों बार मैंने एक भी पॉजिटिव नहीं निकाल पाया लॉन्स की गेम से. Should have gone with the replacement of Jota in and Felix to Liverpool. Maybe, but this is all hindsight, yeah. Look, in the beginning of the season, I know for a fact you did not have money, but yes, I think I think you've also lost a few players through injury, and I think that's an issue. I think Brighton might get knocked out of Europa League group. It'll be difficult, yeah. I back them. I think De Zerbi is a good coach. I think sometimes he's a little too rigid, but let's see. I have a feeling he will get through. I think he'll get through. This is very random, but I don't know why. But I see Arteta playing Tomiyasu this match. I would not be surprised. He's a great 1v1 defender. Against Salah, he did really well. Do we play him against Doku is the question. Is Timber back? No, bro. Timber will not come back until after New Year's. Feb में मार्च में आएगा टिम्बर, अगर आएगा तो 9 months की तो रिकवरी, अभी तो मैच शार्पनेस की भी बात नहीं हुई है. एंड आई थिंक टिम्बर वुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम. कम्युनिटी शील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट था टिम्बर, प्रोग्रेसिंग द बॉल फ्रॉम दैट साइड. एंड आई थिंक जिनचेंको एंड टिम्बर इन रोटेशन, या फिर टिम्बर ऑन द राइट एंड वाइट एट सेंटर बैक इज अ गुड शॉट. बट टिम्बर इंजर्ड है गाइस, हम कुछ कर नहीं सकते. पीपल ओवर इट सिटी बेंच फॉर सम रीजन. Again, you don't have like a Haaland and Alvarez level quality, but last season आपके बेंच से Alvarez आता था, सोचो, है ना. अभी आई नो कोल पामर आता था. अभी आप देखो, यू स्टिल हैव बॉब हु विल कम ऑन. अगर आप बर्नार्डो कोवाचिच का मिडफील्ड खिलाओगे, देन Matthias Nunes will come on. So, and when KDB will play, it's either Julian back to the bench or you'll have KDB coming off from the bench. So, yeah, I think there's the reason people rate City's bench a lot, yeah, because you have those difference makers. Your standards right now are sky high. Grealish, yes, of course, Grealish is there on your bench. So your standards are sky high. But teams like United, teams like Arsenal, teams like Liverpool who are begging for options and difference makers. Um, हमारे लिए तो these are absolute necessities. All of us would kill for somebody like a Nunes from the bench. All of us would kill for somebody like a Grealish from the bench. जब KDB आपकी starting lineup में खेलेगा, all of us will kill for a Julian Alvarez from the bench, notwithstanding his current form also. So yeah, Timber's tackle were very smooth. टैकल से लागे ना उसका प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था. बट वही बात है यार, वी नीड a टिम्बर बट इट इज नॉट देयर. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द गेम वीक जो अभी आने वाला है. प्रीमियर लीग फिक्सचर्स देखते हैं and we will talk about the matches of the week. Now, let me just share my screen for a sec and we will take your predictions and everything as well. Stones out for Arsenal game, we have just heard यार. बाकी टीम्स की भी होंगी. So yeah. Anyway, so first game of the weekend will be Luton Town versus Tottenham away. So Tottenham are away at Kenilworth Road होंगे वो, and I think it's going to be an easy game यार. Tottenham की कोई injuries है? I think Solomon अभी injure हुआ है, Perisic injure हुआ है, Brennan Johnson injured है. Son, Madison are fine, Richarlison on the left, Kulusevski on the right, Madison उससे एक पीछे. They have had a week worth of rest. सार एंड बिसूमा आर गुड. वो लिवरपूल वाली विक्ट्री ने उनको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया होगा. आई एक्सपेक्ट अ बिग विन फ्रॉम टॉटनहम यार. आई एक्सपेक्ट अ क्लीन शीट फ्रॉम देम एज वेल. आई विल go for a 4-0 Tottenham win in this game. I think they have great attacking talent, and even though Luton ने एवर्टन के अगेंस्ट एक रिजल्ट निकाला था, I think Tottenham's attacking prowess will be a little too much here. Does anyone see an upset here? Does anyone see an upset here?
Because I don't. I honestly do not. I think दक्ष भाई कौन सा जर्सी लूं वाला या थर्ड किट लूं? अच्छा, अवे वाला लो या थर्ड किट? आर्सेनल की बात कर रहे हो तो यार थर्ड किट लो. इट्स अ ब्यूटीफुल किट. यू कैन वेयर इट आउटसाइड आल्सो. Yeah, there is no sort of upset here, guys. I think Spurs win it very comfortably. I think the only way Luton gets something out of this game is if they come here, if they play expecting not to win and just shut Tottenham down. Put 10 men behind the ball, shut them down, make them play crosses over crosses over crosses over crosses. But I still think Madison, Romero, all these guys from a set piece will score. So I back Madison to get a real Madison to have a really really good game. So yeah, Tottenham winning this one. Fulham Sheffield की बात नहीं करेंगे. Chelsea Burnley यार. All the Chelsea fans in the house. All the Chelsea fans in the house. Good win in your last game against Fulham. Goals from Broha. एंड दूसरा किसने मारा था? एक तो ब्रोहा ने गोल मारा था एंड मुद्रिक ने गोल मारा था. ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट यार? we'll talk about United as well, Rasil bhai. We'll talk about United as well. So I think Chelsea, yaar, was that a fluke win or was that a turning of the corner moment? I think it was a turning of the corner moment. I think हम जो feel good factor है उसको थोड़ा underestimate करते हैं. I think Burnley में company right now he is trying to play his brand of football. I think his players can do it. It's just that the opposition is too strong, guys. And I think Chelsea, जैसे defensively solid है, I will be very surprised if Burnley come out with the win. I am going for another 2-0 win to Chelsea here. I think another goal from Mudrik will be there. And I think a goal from Jackson will be on the cards. I think Jackson saw what happened in the last game, how everyone was together. I think Enzo will have a great game this one. And I think um, Chelsea's defense will be very, very, very capable of handling Burnley's attack. I don't, to be honest, guys, Burnley's attack does not look convincing to me at all. And I think Chelsea will win this comfortably. I will say a 2-0 win to Chelsea here. Um, it was not fluke. Yeah, I don't think it was a fluke at all. I think it was a turning of the corner moment. 2-0 Chelsea win. Dakshwai Sexy. Thank you so much, Citizen. 2-0. 4-0 Chelsea. Mudrik brace. Damn. If you get a huge win, if Chelsea get a huge win, that game against Arsenal becomes interesting. Because like I said, I think we will lose um, against City. Then we will play Chelsea, who will be coming with Reece James back in tow. Who will be coming with... No, Chilwell is out. Reece James will be back. Broha Jackson will be back. Mudrik will be in good form. Arsenal will be in disarray. बहुत बड़ा boost होगा भाई Chelsea के लिए. So yeah, I think they need to win this to get this sort of momentum before the Arsenal game and their fixture run from hell. But I think Chelsea win this easily 2-1, boys. 2-1. Oh, no, 2-0, not 2-1. Now, जिस टीम के बारे में सब बात कर रहे हैं, मैन यूनाइटेड एंड ब्रेंटफोर्ड. क्या लगता है दोस्तों? 0-0 बोरिंग मैच लग रहा है आपको चेल्सी का? ऑलराइट, आई थिंक चेल्सी विल कीप अ क्लीन शीट फॉर श्योर. I hope they score their goals. Now, United and Brentford. What do you think, guys? I think every time I've backed United, they have let me down. I still back United to get better. I still back them. Against Palace, they were unlucky. Against Galatasaray, they scored their goals. The problem is the defense. Does Eric Ten Hag forget everything and say, मैं तो भाई डिफेंसिवली सॉलिड हूँगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों. Will he be solid defensively? Let's see. He has to score. मैंने हर स्ट्रीम पे ये बोला था, आज मैं हर स्ट्रीम पे जहां पे जाऊंगा मैं सेम चीज बोलूंगा. Eric Ten Hag needs to be pragmatic now. He has to coach a solid defensive unit first and then worry about the goals. I think Hoyland scores again. I think Hoyland scores again. I think Rashford scores again. I think Brentford का लक धीरे धीरे कम हो रहा है. If you look at Brentford's results,
Not convincing at all, guys. Not convincing at all. 1-1 against Forest. Lost 1-0 against Arsenal. Lost 3-1 against Everton. Lost 1-0 against Newcastle. Drew 2-2 against Bournemouth. Won on penalties against Newport County. Drew 1-1 against Palace. Their last win came against Fulham. 3-0. Drew 2-2 with. In game week 2 was their last win, guys. उसके बाद से वो एक गेम नहीं जीते हैं. So, I back Man United over here, guys. I think Manchester United win this one. Finally win this. I think Hoyland scores. I think Rashford scores. I think it'll be a 2-0. No, 2-1 to United. I think they'll concede. They'll still concede, guys. टेनहाग को जावीबान मास्टर क्लास डालना पड़ेगा. अरे प्रॉब्लम ये नहीं है स्वर्णदीप कि वो जावीबान बन सकता है, नहीं. प्रॉब्लम ये है कि उसके पास वो बैकलाइन है जावीबान बनने के लिए या नहीं. विभाष, मैंने ना हमारी गेम पे थॉट्स इनिशियली दे दिए थे, तो आप इसके बाद रीवॉच कर सकते हैं स्ट्रीम. मैंने पहले के 35-40 मिनट्स सिर्फ आर्सेनल सिटी, पहले आर्सेनल को एंड फिर आर्सेनल सिटी को दिए हैं. फ्यूनरल बैंड टू प्ले मैन यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. भाई लोग, आई जस्ट होप इट्स नॉट अ डल 0-0 गेम. It's not a dull 0-0 game. That's all I hope for, boys. I think United score. I think United concede. I think it'll be a 2-1 to United. It's not that United are good. It's just that Brentford are worse right now. That's it. That's it. United have to improve their goal difference, and they have a very good opportunity to do that. Look at them in the table, boys. 7 games, 9 points, not 11. 9 points, because that 11 is not the points, boys. That is the goals they've conceded. They are on -4 GD. No team after 8th has a worse GD. I mean, maybe, yeah. You have Fulham with a worse GD, and सिर्फ bottom teams के इतने हैं गंदे GD, boys. -7, -6, -8, -10, -14. And just Fulham. United have a very, very poor defensive record, and that is why I say, bhai, they have to get something out of this game. I think they'll win it. 2-1. Let's go United. Let's go United. But before we move on to the next game, first of all, guys, 83 of you are still watching. Like कर दीजिए वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं किया है. अभी तक मैंने नहीं बोला है. If you liked my presentation about the Arsenal launch game, like कर दीजिए वीडियो. If you want your team to win, like कर दीजिए वीडियो. And if you want constant content on A for Arsenal, यार, like कर दीजिए वीडियो. 75 लाइक्स हुए हैं, अभी तक 100 लाइक्स नहीं हुए, मुझे तो शर्म आ रही है. यूजली वी गेट टू 100 लाइक्स बाय दिस टाइम. एटलीस्ट 100, एक घंटे में तो 100 लाइक हो ही जाते हैं guys. So if you can, please push to 100 likes. I will really really appreciate it. And बाकी लोग की प्रिडिक्शन देख लेते हैं. GGMU win it for पोहक भाई. सुकून 2-1 ब्रेंटफोर्ड 1-1 ड्रॉ. सैड फॉर मोहक भाई, ड्रॉ ही होगा. 2-3 यूनाइटेड से रासल भाई. दिमाग खराब कर रखा है, रासल भाई बोल रहे थे. 3-1 ब्रेंटफोर्ड. अरे बाप, इफ दिस हैपेंस ना जॉस, it's over for United. Because if United want to have any chances of harboring any ambitions for top 4, have to win against Brentford and have to win against Sheffield, because it's City, Newcastle uske baad. Chalo, Newcastle is in the EFL Cup, but City hai uske baad. I don't think they get anything from that. Fulham away, I don't know what happens there. By December, United have to get their act in order, boys. By December, United have to get their act in order. I said after the Bayern Munich game, Burnley, Palace, and Brentford, they have to get maximum points. They've already they won against Burnley, they lost against Palace, they lost against Tassaray. They have to win against Sheffield and Brentford. Simple si baat hai. 2-2 United through a lead. Kya Onana bench? Nah, no chance. He doesn't get benched. I mean, unless Ten Hag, if Ten Hag does it in the way he wants to protect Onana, I think he can get benched. But Onana की mentality ऐसे, I don't think he'd say कि मेरे को bench कर दो boss, मुझे शर्म आ रही है खेलने में. Onana is the kind of guy who will try to face this head on. I think he will still play. Question is, who plays centre back? Lindelof, Varane. Is that good enough? Especially after that midweek loss. But who else do they have? Is it Maguire and Evans time? I don't know. Who starts an attack? Do you bench Rashford? United fans? आप क्या Rashford को bench करेंगे?
मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज मैंने बोला वे रैशफोर्ड इज दैट कर्स फॉर देम. You bench Rashford, sure, but he can get you that goal very easily. He can provide for Rasmus very easily. Play Garnacho, good option. Good option. But you know what? This is the perfect game for Brentford. You will see Man United dominate the ball a lot. And you will see United fans getting happy a lot because Brentford let these teams have the ball. Then Brentford counter. I will not be surprised. As much as I expect United to win, I will not be surprised if Mbuemo and Visa get a goal or two each. I think losing De Gea was a big mistake. Well, it's just one of those things, yeah. The manager wants to play a particular way. He took that gamble, and the gamble's not working for now. Got nobody, man. Maybe Varane and Maguire start. Yeah, that's the thing. You can blame that backline, but who else do you play? Who else do you play? Does Hannibal play? Does Mount play? Bruno, Casemiro will. So, Onana, Dallo, Varane, Lindelof, Maguire, maybe. I don't know. Lindelof to right back, Dallo to left back. Reguilon is also injured. Right? Varane, Maguire, Lindelof, Dallo. ये आपका बैक फोर होगा यार. Base पे Casemiro. Wait, is Casemiro missing the game? No, he's missing the Champions League game. Sorry. So Casemiro in the middle of the pitch. Mount and Bruno in the middle of the pitch. Or not Mount and Bruno. Anthony could be back. That's a good shout. Shaw and Sancho were pictured coming to Carrington today. That's a good thing. Are they match fit? I think वो press conference में ही पता लगेगा यार. Mikel Arteta की भी press conference आ रही है. Guys, if there's any Arsenal fan in the chat, please can you keep an eye on Mikel Arteta's press conference? I will really, really appreciate it, boys. Really, really appreciate it. 91 likes ho gaye, guys. 9 people, if you could like this video. 100 likes is huge. Sancho, I think it's too far gone, man. Unless Eric Ten Hag has apologized or unless Sancho has apologized, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला. I think Anthony could be back. I think Anthony, Bruno in the right 8, Mount in the left 8, Hoyland at centre forward and Rashford back at left wing. It's a good team. It's a team that can beat Brentford quite easily. Look, हम कितना भी doom and gloom कर लें, to be honest, 3-0 भी जीत सकते United. This is it. You just don't know what Manchester United will show up today or tomorrow. Will it be a United that can beat Brentford 3-0? They're capable. Will it be a United that will draw with Brentford again? Capable, because they concede goals left, right, center. Is it a United that will not score their chances? Rasmus Højlund फिर से फिसल जाएगा. Rashford फिर से लेजी हो जाएगा या फिर सेल्फिश हो जाएगा. ब्रूनो छक्के पे छक्के मारेगा. एंटनी अपने 4-5 क्रॉस ओवर करके बॉल लूज कर देगा. एंड वहां पे दूसरी साइड एम्बोएम और वीसा मार देंगे. हो सकता है यार. हो सकता है. So I think you just don't know what United will show up. I genuinely feel that United can win this one 2-1. But just as easily, because Brentford की strength set pieces भी है, guys. I think Mbuemo and Visa can do something. Brighton Liverpool. All right, let's move to Brighton Liverpool. क्योंकि उसके आगे एवर्टन बोर्नमथ एंड पैलेस फॉरेस्ट पे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है. थैंक यू सो मच है तुषार. ब्राइटन लिवरपूल की बात करें गाइस, लिवरपूल विल बी हर्टिंग फ्रॉम दैट ड्रॉ अगेंस्ट स्पर्स. Brighton will be hurting for a lot many more reasons. Villa se loss, draw against Marseille in the Europa League as well. Lost Estupinian, lost Caicedo, lost McAllister. Of course, return of McAllister at Brighton. Attack is a little unbalanced. Midfield is a little absent. Question is, does Liverpool bite the bait? That's the big question. Because Liverpool भी गोल खाती है. Spurs ने दिखा दिया. If you get behind Liverpool, they will concede. Karu Mitoma masterclass? I don't know. Liverpool right now have too many good players. Luis Diaz is on form. Salah is always on form. If Nunes starts, it's chaos for that back line.
Soboslai, McAllister. Crazy. Crazy. Orcon. Maybe not Endo right now. Gravenberch scored last night. Could be there. Thiago could be there. Backline. Trent. Robertson. Van Dijk. Konate. Crazy. It's a great backline. And to top it all off, you have probably right now the best keeper in the world playing for you. Question is, does Liverpool bite the bait? हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी? बोर्नमथ ने हमारी बेट बाइट कर ली थी. वी मैसेकर्ड बोर्नमथ लास्ट वीकेंड. लॉन्स ने हमारी बेट बाइट नहीं करी. कौन सा भी खेल सकता है. गुड. व्हाट डज ब्राइटन सेटअप एज? मिटोमा विल बी देयर. वेलबैक और फर्गसन में से कोई खेलेगा. Ferguson moment of magic at home? Possible, man. Amex is not an easy area to go to as well. If this was Anfield, easy Liverpool win. Easy Liverpool win. Amex, maybe some doubts. Salah came off last night, so he has adequate rest, so that's good. But Umesh जैसे कह रहे हैं, I would not dismiss Brighton so easily. In the last 3 games against Brighton, I don't think Liverpool have won. They've either drawn or lost. Remember that goal जो मिटोमा ने मारा था? लेफ्ट लेग से फ्लिक करके मार दिया था शॉट फ्रॉम अ सेट पीस. डोंट फॉरगेट दैट. Again, like I said, Liverpool have Allison, Liverpool have Van Dijk, Liverpool have Trent Robertson, Liverpool have Zoboslai. This is a different Liverpool than last season. Thiago not available. This is a different Liverpool from last season. This time, Brighton ka midfield is not facing Henderson and Fabinho off form. This is a dynamic Liverpool 2.0. And I back Liverpool. My only question is, does Liverpool bite the bait? Because Liverpool ने अगर Brighton की bait bite कर ली, you know De Zerbi, you know what he's capable of. You press De Zerbi, you get beat. You give them space, you get beat. Liverpool are too strong for Brighton right now. I agree. But I think Brighton is that hidden package. What is my prediction for this game? A 2-1 Liverpool win. With the added drama that a handball against Liverpool is not given. That is my it. Liverpool can't choose to have a high line against Brighton. They play high line, man. That's the thing. That's how Klopp is. One Trent out of position and Mitoma versus Konate is not going to be fun to watch. That's the only thing. If Liverpool bite, you can't leave Mitoma one-on-one behind Trent. And the way to beat Liverpool is to get behind the defense. यही Spurs ने तो किया था. That Madison ball. Do you remember that Madison ball? That's all you need. One ball behind, man. One ball behind in Liverpool, and Liverpool can feel some pain. Still think Liverpool will win. 2-1 Liverpool. Liverpool don't get a contentious handball against them. Arteta says Saka is in contention to face MCFC despite another knock. Let's see how he progresses from here to Sunday. If he's fit, especially for a game like that. But for these young players at top level, the danger of burnout is real, says Arteta. So basically, he said nothing. Dakshbhai, Junior, Ito or Mitoma? Mitoma's done it at a higher level. Junior Ito is a favorite player of mine, just like Take Kubo is. But right now, Mitoma. Junior Ito, love Junior Ito. All right. Newcastle West Ham will also be a very crucial game, guys. West Ham at home, Newcastle in a great form. Of course, Botman will still be missing, but as you can see, अगर हम बापे को रोक लिया तो Antonio क्या है? I expect a Newcastle win here again, guys. I think it's going to be a fun away day for the Geordies, but let's not also underestimate West Ham. I think every team that has underestimated West Ham has suffered. Every team that has thought of them as just that low block team has suffered. Botman को क्या हो गया? I think he got injured last week, यार.
तो इसलिए नहीं खेला वो, पीएसजी के अगेंस्ट भी नहीं खेला था, आई डोंट थिंक इस गेम में भी खेलेगा. um think that attack of Newcastle is too good. I expect Wilson to start this game. I expect Gordon to have a fun day against West Ham. Kufal ke against. Won't be surprised if Kufal gets spun around over and over again by Ben Gordon. Bhai. Estupinan missing for Brighton will be a big blow. Agreed. 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 Um, but the West Ham, man, they can be under pressure. They've scored against City as well. They can score against Newcastle. गॉर्डन नहीं है क्या? एंथनी गॉर्डन नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो? खेला तो था वो पीएसजी के अगेंस्ट शायद से. नहीं, नहीं खेला था. Oh, then it changes a lot. Oh yeah, he's missing. He's missing. He's missing the trip. Yeah, 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 yeah. Gordon is unavailable. You're right, my bro. You're right. Due to suspension, he's missing it. Thank you so much. याद दिलाने के लिए. Oh, who plays left wing then? Who plays left wing? Namaskar, Haaland bhai. Namaskar. Namaskar. What pros free kick incoming? I will say Trippier free kick incoming, my boy. Trippier की free kick आएगी इस game में. I think Trippier will have a huge game. I think Shar will have a huge game. I think Pope is anyways there. I think midfield battle is going to be very crucial. Paqueta, Benrahma, Ward-Prowse. Take your pick, man. Bowen, is Bowen available? Barnes तो available out है. Willock on left wing. Elliot Anderson can play left wing. All right. Joshua, do you think Almiron plays again after Tuesday? Wilson is also injured. फिर भाई मेरी तो team news ही बेकार है. Wilson injury update भाई क्या? Because I think Isak also picked up a head knock. Wilson offers PSG. Why? How can't follow? Joe Linton is also out. Callum Wilson, no update. Almiron and Murphy. Ah, I forgot about Jacob Murphy. Jacob Murphy could be there. Fair enough. दूसरे अकाउंट को क्यों इग्नोर किया? ऐसे यार सेक्सी लगा. हालैंड का चेहरा देख के ना डर खौफ आ जाता है मुझे, तो उसको इग्नोर नहीं कर पाते. आई विल गो विद 2-0 वेस्ट हैम. आई विल गो विद 2-0 न्यूकासल. बिल्कुल उल्टा डाव. 2-0 न्यूकासल भाई. Almiron surely starts. Many attackers are unavailable. Yeah. Elliot Anderson at left wing. Jacob Murphy at right wing, followed by Almiron off the bench. If Wilson is injured, then Isak has to start. Joe Linton is out. Tonali might play. Bruno might play. Who else? Longstaff? Longstaff time, boys. Some of my comments aren't appearing in chat for some reason. Really? I don't know. I can see you, Joshua. I can see you. Maybe it's a YouTube glitch, bro, to be honest. Maybe it's a YouTube glitch. Sometimes it just happens. Um, what do you think about Eddie Howe as a coach and a manager? I think he's great. I think the fact that he has elevated the level of these players, the fact that the four scorers against PSG were not the players that he bought, but the players he coached, is a testament to how he's running this system. It's absolutely phenomenal, yeah. Credit to Eddie Howe. And Livramento, yeah. Livramento. Lewis Hall is fit. But yeah, credit to Eddie Howe, man. And if you see some Geordie interviews, you will see how much he means to them as well. So 2-0 Newcastle is my prediction. Maybe West Ham get a goal or two, sneaky goal or one. But I see Newcastle winning this one, to be honest, boys. Now, Villa versus Wolves. संडे को विला वर्सेस वुल्स है यार. उफ, इस गेम का क्या होगा? Diaby is out. Yeah, Diaby is out. Watkins is on form. But Wolves have beaten City. And Wolves we know is a good team. I'm very confused about this one. Newcastle 4-3. Joe Willock. I would say Joe Willock at left wing is a waste, man. You play Joe Willock in midfield only. That's the best thing you can do. Um,
All right. We look injured. All right. Wolves Aston Villa, good evening. 1-1 draw hoga. What was Villa's result last night? They played last night, na? They won 1-0 against Rinski. John McGinn. I am smelling a Villa win, boys. I am smelling a Villa win. I don't think Villa's ruck has run out right now, but I smell a Villa win. Kids might get a run out. I would say you should not, bro. I think this is Newcastle's run to win a lot of games on the trot. I think you go strong. I think you go strong here. You go strong here. Until the international break, you go strong, I say. Because a lot of you, I think Kieran Trippier got a call up for England. I don't know who else is going somewhere. I think Shar might be going for Switzerland. But yeah, it could be a draw. But I'm smelling a Villa win, yeah, Josh. Oops, sorry. पॉल पॉगबा किसी ने लिखा मैं भी ट्रबल में आ गया बट आई थिंक it'll be a Villa win. Why? Because I'm considering getting some Villa players, man. I'm considering getting Villa players. अरे यार अब मेरे को वापस शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन. All right. Now भाई, now we come to the bigu game, the biggest game of the weekend, I would say. I have given my thoughts on here. All right, I have given my thoughts on here. It's not looking good, bro. Neto masterclass. To be honest, that's something I should consider. It's not looking good for Arsenal, bro. It's not looking good, bro. Um, would I take a draw right now? 100%. 110% I'll take a draw right now. I am not confident about this one. Usually in every game, there is a dil ka aspect and a dimag ka aspect that I play. This game, dil and dimag both know we are getting pummeled, boys. I've given a nice long ass presentation to you guys about Arsenal's problem. And I think ये problems हमें अभी भी plague करेगी. Now, क्या ये गेम हम लड़ते लड़ते हारेंगे या बॉल के खोने से पहले हारेंगे डिपेंड्स ऑन दैट लाइनअप. If we start Havertz in midfield, we've lost that game already. The 1 hour before kickoff, we have lost that game. If Havertz is 9, still there is a chance. If Havertz is absent, still there is a chance. If Saka is fit, Bhagwani jane. I think City have this in the bag. I think Haaland breaks his goal drought. I think Alvarez scores and continues his good form, and I think Doku announces himself. He will be our Mahrez again. Stones is out for City. De Bruyne is out. Rodri is out. It'll be a painful evening, guys. And I think it's not that I don't back my team. You guys know more than anyone I back my team. I am in love with Arsenal. The psychological pressure of never beating City now will play on not only the players but also the manager. Stones is available. कोई कह रहा है कि पेप ने कहा स्टोन्स इज नॉट अवेलेबल. हद है यार, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा है. चैट की भी बात नहीं लेनी चाहिए सीरियसली मुझे. खैर, apparently stones is unavailable, but अब आप लोग कह रहे हैं कि stones is available. But anyways, I think it'll be a 3-1 to City. I'll take a draw though. I hope Arsenal smash City, but City is different gravy. It's not even gravy, man. City is a full course meal. You have difficulty in digesting. The psychological pressure is too much, man. Arteta has never beaten Pep, and our players have never beaten City. If Saka is injured, how did he get an England call up?
I just think that Gareth Southgate has said we are talking with the medics and we're talking about the club and we'll keep on assessing after Sunday's game how Saka does. I think he'll pull out from England as well. City is not last year City. I know. That is the problem. By the time we figure out how to beat last year City, they've already progressed. That is the big issue. Um, that is the big problem. We might have a team that could probably give a strong competition to last year City. We don't have a team that can beat this year City. Um, so your predictions for the game, guys. Your predictions for the game. मैं तब तक चेक करता हूँ कि जॉन स्टोन्स का सीन क्या है एक्चुअली. हाउ कैन आर्सेनल बीट सिटी? अरे यार जॉन स्टोन्स दिखाओ ना, ये क्या. हाउ डू यू थिंक आर्सेनल कैन बीट सिटी? चलो मैं आप लोग से पूछता हूँ, मैंने तो अपना ओपिनियन दे ही दिया है पहले. ये क्या हो गया भाई? Fully ready to play after missing a couple of months? No. John Stones is ready to play. He's not ready to play. Maybe for national team, but not for us. ओके, सो पेप गार्डियोला के मुंह से सुन लिया आप लोगों ने गाइस. जॉन स्टोन्स इज नॉट रेडी टू प्ले. जॉन स्टोन्स इज नॉट रेडी टू प्ले. Maybe for the national team, but not for us, he says. Now, do I believe the do I believe the bald fraud? Do I believe the bald fraud? I don't think so. I think he will be ready. I think he'll be ready. Copyright audio का नहीं आता usually इन चीज़ों का, especially अगर आप दो लोगों की conversation सुना रहे हो और वो भी less than 5 seconds. It's not transformational. It's not going to earn me money. Long ball tactics and astute defense. Hmm. I never believe the ball fraud. Bhai. If Odegaard dominates midfield against City, which he can, this City side might nick. Pace is the only thing that's missing, guys. Never believe Pep seriously. मैं भी नहीं कर रहा. Arteta and Pep दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, guys. Never trust them. If Arteta tells you it's sunny outside, carry a rain jacket. Same with United. Same with Pep. Don't trust him. I will go City, Haaland, Alvarez and Foden 3-1 City. All right, no problem, bhai. I think we score. I think we score after 2-0. But I think City bury us 3-1. Trossard क्या आएगा? I hope so. If Martinelli is not fit, I hope Trossard is. Is there an update on Martinelli? Let's check. There is nothing about Martinelli. Nothing about Martinelli. 4-3 to Arsenal. If Arsenal win against City, it will be such a huge psychological boost. If we beat City, I can see us going on a run. Is Saka playing? Arteta has said he is in contention, but he will be assessed before Sunday. 2-1 without Rodri, we are losing, no cap. Let's see. Whatever you might feel, of course. City का सोचते ही से दर्द होने लगता था. Rodri KDB is key factor against team like Arsenal, but both are unavailable. I agree. Both are very important. The problem is those are not your only weapons. For us, Saka, Martinelli are our only weapons in those positions. Yes, Calvin Phillips is not ideal. Yes, Bernardo or Kovacic might not be ideal, but they're competent. And you know what? आगे जो आपके हैं ना, Alvarez and Haaland, they'll be key. They'll be super duper key. अरे बाप रे, अयान ने 7 महीने कंप्लीट कर लिया यार. सो प्राउड ऑफ यू ब्रो अयान. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल फॉर 7 months ब्रो. मच लव टू यू ब्रो. They'll play Kova and Nunes. I think so too. आर्सेनल जीती तो दक्ष भाई आप शर्टलेस स्ट्रीम करना है भाई. मेरी शर्टलेस देखने की क्या फेटिश चढ़ गई आप लोगों को, हैं? खुश हो जाना मेरे लिए.
हाँ, एक सुपर चैट भेज देना मेरे लिए। हाँ, 10 घंटे की 6 घंटे की स्ट्रीम मांग लो मेरे लिए। हैं, ये नंगा करने की क्या है अच्छा मेरे को। अगर जीत गई तो गिव अवे कर दो भाई, गिव अवे तो हो गया। वन वे आर्सेनल कैन बीट सिटी, if सिटी लूज their heads. It's the only thing, man. But City in big games, na Joshua, they just never lose their heads. Yeah, if City get a red card, if City get a red card, all bets are off. Is Renisu a member? Never. Not in your dreams. Pogba may face 4 year ban. He'll retire then, man. Poor guy. What about poor guy? He took testosterone. अगर जीत, हाँ हो गया. Foden and Doku also. I think Jack will be number 10. No, never really know. You know, you never really know. I think as a surprise selection, I think Grealish starts this game. What do you think, boys? Do you think Grealish has any opportunity to start this game? Red card incoming from City. Bhai, if they get a red card, I think there will be a red card in this game. I have a feeling there'll be a red card because Michael Oliver. You know how much Michael Oliver loves red cards? I think it'll be a red card. I think it'll be to Eddie Nketiah. I can't see a fatty and a hairy Paksh bhai. Don't worry. I am definitely, well, am I fat? I'm generally on the larger side. I'm definitely not hairy, so don't worry. Uh, think Silva will play in midfield, right? City fans have been getting annoyed with Grealish. I just think they're spoilt, man. Doku will come from the bench. Alvarez, Bernardo, Foden, Haaland up top. What a starting lineup, man. What a lineup. But yeah, वैसे भी शर्टलेस ही हैं, जर्सी है। अच्छा, अच्छा. Um, yeah. So yeah, that's a preview, man. Again, जो लोग late आए हैं, I will say one thing. If you can, after this stream, watch it again for the first 25-30 minutes. I've done a tactical review of Arsenal versus Lens and Arsenal in general for 25 minutes. It's not long. 25 minutes is all it is. It's a proper presentation. It's got visuals. It's got GIFs. It's got stats. It's got everything. Um, तो देखना, बताना कैसा लगा आप लोगों को. एंड लीव अ फीडबैक इन द कमेंट्स यार. इट विल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिकॉज there is a loud, I would say, at least I think, a minority of people who want statistical and analytical breakdowns and everything. But is that a minority, or do other people really appreciate it? मुझे नहीं पता. Going shirtless is the Geordie way of celebrating. Bhai, imagine. Which reminds me, I should order my Newcastle jersey as well. I've been meaning to. Anyways, guys, thank you so much for coming. Rewatch the stream starting से थोड़ा सा 25 मिनट का देख लेना. मेरे को थोड़ा फीडबैक दे देना, अच्छा लगेगा. अभी तक हमारे हो गए हैं 107 लाइक. आई डोंट नो कितने लाइक्स हुए हैं. लेट मी चेक अगेन. वी हैव 107 लाइक्स. A little low side, कोई बात नहीं. But if you haven't liked the video, कर दीजिए. And if you haven't subscribed, कर दीजिए. Tried my best to give a tactical thing. But yeah, tactical thing should be a separate video. Understood, Puneet. 25 minute की video लेकिन कोई देखता नहीं है. That's the problem. But I understand. I get it. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. See you all soon. I will be today on Drog Baba's channel, and I will also be on Zishan Bhai's channel on Talk Football HD. So catch you all there later. See you all soon. Tata. Bye bye. Love you all. Bye bye.